Anuj, let's start your full mock for HPCL. So start with your introduction. Okay. Good evening, sir. First of all, thank you for the opportunity for introducing myself. I am Anuj Kurumkar. I basically belong to Amravati district in Maharashtra. I have done my graduation from mechanical engineering from Government Engineering College, Aurangabad. During college, I have done multiple projects, including industrial sponsored project, as well as participation in a national level all-terrain vehicle competition. Uh, Currently, I am working as a professional skill employee in Larsen and Toubro defense sector from 5 years. I am working in process and methods engineering department, handling both proto as well as production systems. Okay. So you are working in L&T since 5 years. Correct, sir. Yes. Okay. Okay. So why you want to leave your job? Because L&T is a reputed company of India. Correct, sir. I know that L&T is a very good company, but I would like to join HPCL because I know. Just a minute, sir. Let me correct. I know, sir, that L&T, being in L&T for 5 years has, I have learned many things in L&T, but I would like to switch to PSU like organization like HPCL because it will offer me more challenges, more things to learn. Also, sir, being a HPCL, I know that I will have a better job security, also some more perks in it, and a third thing, what I can say, sir, being in L&T, which is a kind of private organization, so I know that being in a HPCL, which works for a nation, so I could also contribute towards a society. Do you know Government of India it stands to privatize almost all the PSUs? If in the next 5 year, 6 year, HPCL also got privatized. Yes, sir. I have heard about it, but still, sir, I know that being in because few of my friends and senior colleagues are also in PSU organizations. So, being in interaction with him, I know that they have got a very good platform to learn. So, I wouldn't mind that, considering that fact also. I would certainly like to join it. Okay. So you said you did the many industrial sponsor projects. So can you name few of them? No, sir. Industrial project was one. The other was what I told about the all-terrain vehicle competition. So the being the industrial project, what I told as a sponsored project. So in the our final engineering thing, basically we had done that project in Osborne Industry in the Aurangabad MIDC. So that project was related to a conversion of a manual process to a semi-automatic process. That was our main objective of the project. Hmm. So should I tell more about it? No, 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 no. Okay. Anuj, have you gone to the website of HPCL? Yes, sir. I have gone through it. Okay. So HP Gas have some tagline. Can you tell me the tagline of that HP Gas? Uh, Sorry, sir, I'm not able to recollect. But on the homepage, sir, I know that there are various portfolios or what are the products of HP thing that maybe 5, 10 products are there. So I have gone through it, but I don't know the tagline. Okay. So other than the petroleum or petroleum industry, what is the other branches of HPCL? Do you know? So other than petroleum, other thing is HP gas. Lubricants is also one of the product of HP. Then what I can say is it is also coming now in the renewable sector. Hmm. As of now, I could recall this much. Okay.
Acha, have you heard about the green hydrogen? I have heard about it, sir. Okay. So why we called it green hydrogen? Why not simple hydrogen gas? I'm not aware about it, sir, in detail. Hmm. Okay. Acha, in petrol pump, uh, have you seen any color coding for the petrol and diesel pumps? Yes, sir. There is a different color coding. I think the green is for petrol and the blue is for diesel, if I am able to recollect correctly. Hmm. Okay. What is your hobbies? What you like to do in your free time, Anuj? Basically, sir, I'm a sports enthusiast. Hmm. I like to play table tennis and cricket. In addition to it, I like to read books as well as write some small poems. Also, watching cricket and movies is also one of my hobby. अरे टेबल टेनिस की जो टेबल होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है? Uh, Not sure exactly, but width wise it is 1200 by 2000 something like that. Okay. So what you have written recently? You like to write poem now? Yes, sir. I like to read. So, should I tell that? Yes. Just give me a moment to recall the exact lines. Hmm. Okay. So, वैसे तो सितारे होते हैं वैसे तो सितारे सितारे होते हैं आसमानों में, बट चमक उठते हैं अंधेरों में ही। वैसे ही सॉल्यूशंस जो है वो रहते हैं हमेशा, बट मिल जाते हैं अकेलेपन पर ही, समथिंग लाइक दैट। Hmm. Okay. Now Vishal sir will take for technicals. I will give you feedback. ठीक है? थैंक यू सर। Okay, Vishal sir, over to you. Yes, hello Anuj. हाय, गुड इवनिंग सर। Good evening. So you are going for HPCL. HPCL मैकेनिकल, यस सर। Anuj, what are your favorite subjects? Design of material, strength of material, also manufacturing and thermodynamics. So your B.Tech, your highest qualification is what, like B.Tech or M.Tech? B.Tech sir. B.Tech. When you graduated? I graduated in 2017. 2017. So you are doing like you are having any kind of work experience, Anuj? Pardon? You are having any work experience? What you are doing after that time? Like Yes, sir. I got selected in campus placement in Larsen and Toubro defense sector. So from 2017, I'm working. this time also you are working in L&T. Currently, I'm working. Yes, sir. Okay, fine. So you mentioned strength of material is your favorite Yes, sir. subject. So can you tell us something about the elasticity? What is elasticity? Elasticity is the ability of any material to regain its shape post application of force. How we can check, like suppose we want to define, like suppose you are having three materials and we want to check like which particular material is more elastic, how we can check? Okay. Just a minute, sir. Sir. So basically, if you have three materials, so the what input we have to give is the same value of force. The dimensions of all these, I'm assuming the dimensions of every all the cross section area is same.
So once I have applied the same value of force, so upon application, the material which will regain its position will be more elastic. Suppose you applied some 100 Newton of force. Okay, all three are regaining their shape completely. Okay. So from the uh, elasticity modulus, Young's modulus, sorry, from the Young's modulus, if you know the value of Young's modulus, we can certainly tell which is more elastic. The value, the one who has which has higher Young's modulus will be more elastic. Like if you compare steel versus rubber, so steel is more elastic. Achha, can you tell us something about the axial rigidity, torsional rigidity, and flexural rigidity? Rigidity. Okay. Basically, the rigidity, what it defines here is the resistance to its deformation. So axial rigidity is defined by the formula of A into E, where A is the cross-section area and E is the Young's modulus. Similarly, same goes with the torsional rigidity, which is the formula is J into G, where J represents the shear modulus and capital J represents the polar moment of inertia. And third thing, I think, regarding bending rigidity. Flexural, yes. So that the formula for it is E into I, where E is Young's modulus and I stands for the moment of inertia. So basically, by knowing these things, we can tell which is more which can provide more resistance to the deformation by using this rigidity. What about section modulus? What is section modulus? Section modulus is defined by the formula of moment of inertia divided by the largest distance from the neutral. What it represents, Anuj? What it represents? What it represents? It represents the resistance to bending, basically. Suppose there are two members, one is I channel and one is C channel. So for same value of I and C, maybe if I take the vertical dimension what are available in standard market. So if I channel has more section modulus, so it represents if the same value of force is coming at the midpoint. So I will deform. Anuj, how we manufacture LPG cylinders? Which particular manufacturing techniques we use for manufacturing of LPG cylinder, domestic LPG cylinder? Yes. Sorry, sir, not aware about the manufacturing process. Okay. Achha, if you will consider any point on the LPG cylinder, what kind of stresses, can you give me state of stress for a point on an LPG cylinder? So there is a cylinder filled with some gas. Okay. So some pressure is there. Correct. So what kind of state of stress we will get? So considering cylinder as it is a cylinder, so basically, sir, there will be two types of stresses experienced by the cylinder. One is like hoop stress, and the second is a longitudinal stress. Okay. So hoop stress will be along the circumferential direction of the cylinder, and the longitudinal stress will be along the axis of the cylinder. So both will be kind of what, like tensile or compressive or what? It will be kind of tensile, sir. Both will be tensile. Yes, sir. Circumferential as well as longitudinal, both will be tensile process. Both will be tensile. Yes. Okay. Fine. So for that case, Anuj, what will be the maximum shear stress? If you will consider some pressure, you can consider any particular, pressure. Actually, I'm not interested in the numerical value. Just tell me how you will find out the maximum shear stress induced and the plane of maximum shear stress. Okay. So using more circles, sir, we can definitely find the plane as well as the shear value. So we have to basically consider both the hoop stress and the longitudinal stress. We know the hoop stress is twice the value of the longitudinal stress. So basically, you have to mark these 2 points on the Moore circle, and we'll get the maximum shear plane and its location also. Go ahead and tell me the location. Just assume any value, maybe hoop stress. Let me give you hoop stress. Suppose that is
200 megapascal. Okay. Hmm. Go ahead with that and tell me some value of the maximum shear stress and the direction. Okay, so suppose we take hoop as 200 thing. So the longitudinal will be half of that, which is 100. So basically, we'll draw these 2 points on the horizontal axis as they are both are tensile forces. So if I draw 100 and 200, so the diameter of that circle, what will come out is 100 only. So the maximum shear stress, what will come out is as diameter is 100, so radius will be 50. So maximum shear stress will be 50 MPa. So diameter represents maximum shear stress or radius. Radius represents maximum shear stress because 100 and 200. So diameter we got as a 100 value. 100. So radius will be 50. So the point on the Mohr circle, so that vertical point that represents the maximum shear stress. So that is at the that is 50 MPa, and it is perpendicular. Okay, and what about the direction? Plane? It is 45 degree to the any of the tensile stresses. Maybe the direction we'll need to check. 200, if we compare to 200, so that 45 degree will be like anti-clockwise in actual scenario. What is stress concentration, Anuj? Basically, sir, stress concentration represents the whatever stress lines are there because of the non-uniformity of the cross section. Not cross section. Okay, non-uniformity of the cross section. The stress flow line maybe converge if the cross section is getting reduced. So the stress flow lines will get concentrated at the lower cross section. So that will implicate the stress concentration thing. Okay. You heard about theories of failure, Anuj. What is the use of those theories of failure, and which particular theory is the best theory for a ductile material? Okay. Basically, sir, there are 5 types of theories of failure, which take consideration all the aspects, like one normal stresses also as well as shear stress also. So basically, for brittle material, uh, mac- for brittle material, uh, maximum principal stress theory is best suitable for the brittle material, and for ductile materials, it is like one misses stress theory, and so just a minute, sir. Recollecting. Point 5. So maximum shear stress and von Mises are these two theories are for the ductile material, and for shear material it is like maximum principal place shearing. These are used for the brittle material. Maximum principal stress या principal strain? Maximum principal planes. No, plane strain. Strain. Maximum principal strain or maximum principal stress? Principal stress, sir. Okay. Okay. Can you tell me something about the various casting defects, Anuj? Okay. One or two what I could recall is like one is kind of blowhole. Then second is porosity. I'm not able to recollect other technical parameters. आपने कोल्ड शर्ट या मिश्रण के बारे में सुना है? Cold run या मिश्रण, correct? Cold shut and मिश्रण. I know about मिश्रण. I'm not sure about cold run. Cold shut. Okay. Sprue का क्या function होता है अनुज? What is the function of sprue in casting?
Spume. Sprue. Acha. Sprue. Okay, got it. Basically, sprue is given. Yes. Sprue is given to avoid the air. अच्छा क्या shape होती है? What is the ideal shape for sprue? It should be parabolic, sir. Parabolic. Why? Why parabolic? Basically, sir, the pressure difference means at the top of the sprue and the bottom of the sprue. So there should be higher pressure difference at the top and lower at the bottom. So to get that, using Bernoulli, we can derive that, sir, that the shape should be parabolic considering these two conditions. Acha, when fluid moves lower, particular casting matter which we are adding, why the cross-sectional area of that material decreases? At the top cross-sectional area is higher. Correct. Here, and as it is coming down, its cross-sectional area is decreasing. Are you ready, Anush? Yeah. For why actually cross-sectional area decreases? While pouring the molten metal. Yes. Not sure, sir. I think it is related to the air thing only, that air shouldn't get entered. That because that's why we want a similar kind of shape, now. Correct, yes, sir. But the area is decreasing. That's why we want some kind of parabolic shape for the sprue. Yes, I'm not sure, sir. The area is not decreasing. Suppose when you are pouring any kind of metal material, suppose its area is not decreasing, then even there is no such need of using such kind of parabolic sprue. Then you can go ahead with the cylindrical sprue also. It is decreasing. So I'm asking you why actually diameter decreases, cross-sectional area decreases. No, sir, I'm not sure. Okay. Anush, you heard about iron carbon diagram? Yes. Okay. So what's the maximum? Acha, tell me. Eutectic point क्या होता है? What is eutectic point? Yes, I'm not able to recollect. But basically, it is what I can somewhat recall is it is at the point where the equilibrium reaction happens between is the reversible reaction, chemical reaction, where solid gets converted into two liquids, I suppose. अच्छा, eutectic से मतलब क्या है? Actually, eutectic. Yes, I'm not sure. Okay. Anush, what is quenching? For what purpose we carry out quenching? Quenching is basically sudden cooling of any component from its higher temperature. So the basic purpose of quenching is like to increase the hardness of the material. Acha, what will be the difference? My last question to you: what will be the difference in the structure which we are going to get after quenching? If we are carrying out, suppose, oil can quenching in first case, second case we are carrying out water quenching. What will be the difference? Okay. So oil quenching will have more hardness compared to water quenching, sir, because the conductivity of oil is more, so it will basically transfer the heat fastly. So the cooling rate will be high in the oil case than water. Hardness will be more in the oil quenching than water quenching.
चलो ठीक है अनुज, आई थिंक नाउ वी कैन प्रोवाइड द फीडबैक। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और Thank you, sir. पूछता हूँ, आप पे स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स व्हिच यू कैरी व्हिच मेक्स यू सुटेबल फॉर दिस पोजीशन इन एचपीसीएल? So basically, sir, any organization is looking for certain traits in the employee. So I consider like the responsible or reliable. I'm a reliable person. Also, perseverance and managerial kind of skill I possess because of whatever experience I have had in my L&T thing. So these traits make me a suitable candidate for this job. Any significant weakness which can affect your performance in HPCL? Uh, One of my weakness is stage fear, and second I can say is I get anxious, but that anxiety is in some high pressure situations. But I'm working on it. As I said, I am So reading you feel that can affect your performance or your work in HPCL? little bit, sir. Yeah, but basically I'm working towards it because I know that these are my weaknesses. So I'm reading a book which will directly means reflect or that will provide that is providing me some solutions or steps how to bypass this anxiety kind of feeling. ठीक है, ठीक है अनुज, आई थिंक नाउ वी कैन प्रोवाइड द फीडबैक। Thank you, sir. अनुज देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो आपका ठीक है, बट थोड़ा सा आपने थ्योरीज ऑफ फेलियर वगैरह अच्छे से पढ़ा नहीं है। इनिशियल क्वेश्चंस यू आंसर्ड करेक्टली, जो मैंने आपसे पूछे थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह या एक्सियल रिजिडिटी, Okay. टॉर्सनल रिजिडिटी एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। आई आस्क्ड यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू एलपीजी स्लेटर आल्सो। Hmm. स्लेंडर मैन्युफैक्चरिंग का देख के जाना, बिकॉज़ दैट यू हैव नॉट आंसर्ड। पाइप मैन्युफैक्चरिंग, स्लेंडर मैन्युफैक्चरिंग, दीस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एचपीसीएल। वो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस भी देख के जाओ, वेल्डिंग भी देख के जाओ। दो पार्ट्स होते हैं सिलेंडर के, व्हिच पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग वेल्डिंग टेक्निक वी यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ दोस टू पार्ट्स। ओके, और Manufacturing देन of cylinder and sir, sorry, cylinder and सिलेंडर के जो दो पार्ट्स होते हैं ना, उसपे सर्कमफरेंशियल वेल्डिंग okay, okay. Hmm. यू विल फाइंड। तो कौन सा कैसे वेल्डिंग करते हैं उनकी, ठीक है, स्ट्रेसेस क्या क्या इंड्यूस होती है, वो आपने ठीक आंसर किया था। हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एंड द मोर सर्कल, वो ठीक था आपका। थ्योरीज ऑफ फेलियर एक बार अच्छे से देख लेना, आपको बहुत क्लियरिटी नहीं थी थ्योरीज ऑफ फेलियर की। ओके, और आपने वो शायद एक गलत भी बताया, वो एक आप एक अच्छे से चेक करना। एंड देन आई आस्क्ड यू सम क्वेश्चन फ्रॉम प्रोडक्शन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज़ यू मेंशन दिस पार्ट एज योर फेवरेट सब्जेक्ट। आई फील सम रिवीजन इज रिक्वायर्ड इन दैट एरिया। बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं किया आपने, तो चीजों को डिफाइन करो। एक सर आप बोलोगे कि जैसे मैंने पूछा स्क्रू क्या होता है, द स्क्रू इज द a kind of passes we provide in a casting just for entering the molten material, pouring the molten material, a cavity provided for pouring the molten Correct. material, that is known as screw। अब उसका शेप होता है, कैसा होता है, काइंड ऑफ पैराबोलिक शेप इज आइडियल शेप, बट जनरली वी गो विद द काइंड ऑफ टेपर्ड शेप दे देते हैं हम, सिलिंड्रिकल टेपर्ड शेप। अब होता क्या है, यू नो व्हेन pouring metal is entering into the cavity, what happens at the top, the potential energy is higher, at the bottom potential energy is decreasing। when the fluid is moving from top to bottom, potential energy is decreasing and the kinetic energy is increasing। Yes. But the top kinetic energy is less, at the bottom the kinetic energy, or what you can say velocity is more। velocity ज्यादा होती है, तो you know there is a particular conservation of mass। I hope you studied mass balance। whatever mass is you are pouring at the top, that conservation of mass will be there। Correct. Okay, so velocity is more, and what is mass flow rate? That is nothing but area into velocity। Hmm. So as the molten material is moving from top to bottom, its velocity is increasing। Hmm. So mass balance must be there, conservation of mass must be there, so area must decrease। Are you getting, Anuj? The Acha. product of area into velocity, that is mass flow rate। Okay. Okay, so that's why when you are pouring some fluid material, that area will decrease। Okay, and that will decrease in a kind of parabolic manner। Then that's why, just to we are interested so that there will be no air entrapment will be there in that procession। that's why it is good to use some kind of parabolic shape। but practically it is difficult to provide such kind of shape। आपने आयरन कार्बन डायग्राम तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है अनुज। Sir, I couldn't recall actually. हाँ, उसको देखो एक बार अच्छे से, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट हो जाएगा। मटेरियल
material science, cast iron steel, pipe manufacturing, pipe materials, different techniques we use for pipe manufacturing. अगर आप ये बताओगे ना subject, when you are highlighting the subject as your favorite subject, strength of material manufacturing, then they are going to ask you question related to that. ठीक है, बाकी मेरे को ठीक लगा, आपका डिलीवरी स्टाइल ओके है एंड कंफर्टेबल रहते हो आप, सच नर्वसनेस नहीं है। एक एंजाइटी को अपनी वीकनेस, ठीक है, यू कैन हाईलाइट दिस एज ए वीकनेस, बट उसको ये मत कहो कि ये अफेक्ट करेगा। अच्छा। आप बोल दो कि देयर आर सम स्पेसिफिक थिंग्स ना जिसके लिए हो जाते हो सकता है प्रोफेशनली ना हो आप, मे ओके। बी आप इमोशनली किसी चीज को लेके, या कोई जो आपकी आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं, ओके, उनको लेके आप थोड़ा सा, आपको उनका टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है। वर्क का अगर टेंशन प्रेशर आप यू आर हाईलाइटिंग कि मेरे को दिक्कत हो सकता है, then that is a very negative thing। उसको ये मत कहो कि मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। Are you getting it? तो उसको थोड़ा रिफाइन करो, go for some HR snap, mention this, and then you can have discussion with Vijender sir or Shubhya ma'am about that। Sure, Okay? sir. Okay. What I feel, it is not right or good to highlight that as the weakness which can affect your performance। Weakness will be there, like in all persons there are some weakness, but ऐसा weakness नहीं होना चाहिए कि जो आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट करे। आर तो उसको आंसर को आपको रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपसे विजेंद्र सर इज गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट योर एचआर पार्ट, एचआर परफॉर्मेंस। ओवर टू यू विजेंद्र सर। Sir, just a question, last question. Yes, go ahead। I explained manufacturing as my strength because I am working in a process and method engineering department, which basically deals with the manufacturing kind of domain. So I'm not that much confident about the manufacturing. The overall. मैन्युफैक्चरिंग बहुत ब्रॉडर एरिया है, मैंने आपको कुछ एरियाज बताए हैं। जैसे Correct. आप जब मैन्युफैक्चरिंग बोलोगे तो पाइप मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, उसमें वेल्डिंग आ जाएगा, पूरा Correct. पूरा कास्टिंग आ जाएगा। तो कास्टिंग से, वेल्डिंग से, और मटेरियल तो ऑलरेडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मटेरियल का ही मैन्युफैक्चरिंग करोगे ना, तो मटेरियल साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन, जो आपका स्ट्रेन हार्डनिंग है, ठीक है, या आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो या तो स्पेसिफिक एरियाज हाईलाइट करो, इस आई प्रिपेयर्ड दिस पार्ट फॉर माय इंटरव्यू, एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग ऑन दिस पोजीशन सर, आई एम हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ वर्क। उससे क्या होता है, आप इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करते हो टुवर्ड्स सम स्पेसिफिक एरियाज। देखो, इंटरव्यू वर्क तो आपसे रेंडमली क्वेश्चन पूछेगा, इफ यू आर नॉट गिविंग एनी हिंट टू हिम और हर, तो आपको क्या करना है, व्हेन यू आर मेंशनिंग अबाउट योरसेल्फ कि सर दिस आई एम अनुज, आई एम वर्किंग at this particular level in this particular company from last 6 years, and I'm handling this kind of work sir, I'm specialist or I'm having some specialization expertise in this area। बस आपने क्या कर दिया, आपने अपना अपना बता दिया। then interviewer is going to ask you question from that only। फिर हो सकता है वो आपसे आपके फेवरेट सब्जेक्ट भी ना पूछे। Correct, sir. Are you getting? But suppose you are only mentioning about your experience, you're not especially attracting interviewer towards some specific areas, then he is going to ask you the random question। तो random question में difficulty आएगी। Introduction में जैसे मैंने process plan some part of your interview। In introduction part only, you need to highlight some of the key areas in which you are having strength। Okay, noted। उससे आप लिमिटेड, आपका एक दायरा बन जाएगा। अदरवाइज रैंडम अगर आपने नहीं दिया तो रैंडम इंटरव्यू रैंडम जाएगा, एंड देन यू विल फेस डिफिकल्टी। ठीक है, ओके अनुज, गुड लक। Thank you, sir। यस अनुज। हाँ सर। और देखो, सर ने बोला आपको तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो just saying that you are working in the defense sector of the L&T, it is not sufficient। ठीक है ना, तो उसको आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि सर आई एम वर्किंग ऑन दैट फील्ड इन L&T, ठीक है ना, वेयर आई डू दिस काइंड ऑफ वर्क, ठीक है ना, मेरा जॉब ये है, ठीक है। फिर वो आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे, तब वो एक्सप्लेन करेंगे, तब वो आंसर उससे रिलेटेड ही हो जाएंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि जो आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी अभी मोर देन एनफ है, क्योंकि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका इंटरव्यू मैक्सिमम आपके एक्सपीरियंस बेस्ड ही होगा, ठीक है। लेकिन एचआर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट इज एथनॉल, व्हाई क्या बोलते हैं, व्हाट इज अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है ना, आइडिया होना चाहिए इनके बारे में।
स्पोर्ट्स के बारे में, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है सर, यस। डायमेंशन, ये सब चीजों के बारे में इनको आपको पता होना चाहिए। और पोएम जो आपने लिखते हैं इसको कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और इसको ये अभी सही से सुना नहीं पाए आप इसको। अगर आप उसको आप अपनी हॉबीज में बता रहे हो तो इसके आप बी प्रिपेयर फॉर दैट कि दे विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट द लेट रिसाइट अ पोएम व्हाट यू हैव रिटन, ठीक है। करेक्ट सर। और एक जो सर ने पूछा था क्वेश्चन कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाई वी सिलेक्ट इन एचपीसीएल, ठीक है ना। तो नेवर से अबाउट द कंपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, कंपनी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कंपनी को जो चाहिए उसको पता है, ठीक है ना। टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। सर, I am persiveness. I am have developed my managerial skill during my 5 year of service, and I am honest. I am a reliable person. That's why I'm thinking I am the suitable person for the HPCL. तो सर हम जब स्ट्रेंथ का ये मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लाइक प्रोजेक्ट वेयर आई वुड यूज दिस स्किल्स, और जस्ट स्किल्स मेंशन करना इज जस्ट ओके विदाउट गिविंग एग्जांपल। मेंशन कर दिया, फिर वो पूछेंगे आपको, अच्छा टेल मी व्हाट योर परसिवनेस, कि व्हेन यू फील यू आर परसिवनेस, कि आपने कैसा ऐसा क्या किया कि आपको लगा कि यू आर परसिवनेस। ऐसा तो नहीं है कि यार कि आपके परसिवनेस की आपको बचपन से ही है, तो आपने ट्राई किया होगा ना कि आई आई एम परसिवनेस, आई फील आई एम परसिवनेस इन दिस रिगार्ड। तो आपने कुछ एलएनटी में कुछ काम किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा कि आपको सॉल्यूशन जब तक नहीं मिला आपने उसको एफर्ट करते रहे, और उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने दिन रात एक कर दिए, तो यू डेवलप योर परसिवनेस स्किल है। ये सब ऐसे ही डेवलप होते हैं ना, ठीक है ना। यस यस। चलो, सर आई हैड टू क्वेश्चंस। हाँ फर्स्ट इज रिलेटेड टू एचपीसीएल वेबसाइट, जो वो हमेशा पूछते हैं कि आपने एचपीसीएल वेबसाइट देखा था, एंड एनी फीडबैक ऑन द वेबसाइट। सो तो हाँ, उसको देखो, उसको ऐड देखो। ये सब जो जैसे अभी आईओसीएल का ऐड टीवी पे भी आ रहा है, नोट अब ऑफ एचपीसीएल, ठीक है ना। तो एचपीसीएल के जो ऐड होर्डिंग लगे होते हैं, कहीं पे पढ़ा हो आपने, देखा हो, कुछ ऐसा देखा हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एचपी गैस का है, डिलीवरिंग हैप्पीनेस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। ठीक है ना। सिमिलरली इसका एचपी क्लब से रिलेटेड एक स्लोगन है उनका, जो पेट्रोलियम से वेलकम टू, कुछ ऐसा है एचपी क्लब। तो ये सब चीजें आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, वो पूछ सकते हैं इसके बारे में। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इनके आंसर नहीं करोगे तो भी इतना नेगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन अगर आंसर कर दोगे तो बहुत पॉजिटिव जाएगा। करेक्ट सर। ठीक है सर जो वेबसाइट में वो जनरली पूछते हैं ना कि व्हाट एडिशनल में आपको क्या लगा कि जो इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। आई हैव जस्ट थॉट ऑन इट, सो मे बी वेदर दिस इज गुड, और मे बी यू कैन सजेस्ट मी कि लाइक जो बाकी वेबसाइट पे नंबर ऑफ व्यूज रहते हैं कि एक पेज पे कितने लोगों ने इस वेबसाइट को देखा, मे बी कैन आई टेल दैट एज जस्ट अ फीडबैक टू द वेबसाइट। हाँ, अगर आपको लगता है कि व्यूअरशिप ऑफ द वेबसाइट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपको उसको इंडिकेट करना चाहिए कि कोई भी व्यूअर आए तो उसको आइडिया तो हो जाना चाहिए कि यू आर द योर नंबर एंड सो सो मैनी हैव पर्सन हैव विजिटेड दिस वेबसाइट। तो एक वो उसके ऊपर पॉप अप करके रखे तो ठीक इज इट है। इज इट अ गुड सजेशन और मींस नॉट रिलेवेंट? व्हाट डू यू सजेस्ट? रिलेवेंट है, सजेशन है। ओके ओके। एंड द लास्ट थिंग सर, जो लास्ट में क्या पैनल पूछते कि एनी क्वेश्चंस फॉर अस, सो उसमें मैंने सोचा है कि मे बी आई विल आस्क कि जो भी ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो हुआ था, सो हाउ डिड एचपीसीएल हैंडल दिस क्रिटिकल सिनेरियो? सो No, never ask the questions when they ask you any question you want to ask, ठीक है ना। अच्छा, okay, so हाँ, what should I say, means if they have given me opportunity, so थैंक यू। अनुज, उसमें आपको पूछना चाहिए अपने कैरियर रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन आपके लिए पूछने का नहीं अच्छा ओके, सो बनेगा यूक्रेन क्राइसिस को एचपीसीएल ने कैसे हैंडल किया। आप ये पूछोगे ना कि सर जो यंगस्टर सेंटर करते हैं उनके लिए आई 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 एक्सप्लोर्ड देयर आर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, बट आई एम हैविंग सर स्पेशल इंटरेस्ट इन एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट, तो उसके लिए क्या कुछ कंपटीशंस होता है लाइक दिस।
तो आप अपने लिए कुछ क्वेश्चन पूछोगे जो आपसे रिलेटेड है और जो HPCL से रिलेटेड है। Are you getting, Anuj? I'm just giving you idea. मान लीजिए suppose there is someone appearing for the interview having a good interest in cricket. अच्छा, ओके, हॉबी नॉट है लाइक, क्रिकेट उसका, तो पूछना चाह रहा है कि सर क्या ऐसा ऐसे लेवल पे कुछ ऐसे कंपटीशंस होते हैं जहाँ पे आई विल बी एबल टू प्ले फॉर HPCL समथिंग लाइक दैट। तो जो आप क्वेश्चन बता रहे हो ना वो रैंडम क्वेश्चन है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, वो ठीक है, इट इज इन जनरल रिलेटेड टू ऑल। वो क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं रहेगा, आप कुछ ऐसा पूछे जो आपसे और HPCL दोनों से रिलेटेड, इफ यू विल गेट अपॉर्चुनिटी इन HPCL बट यू कैन थिंक। एज अ प्रोफेशनल और एज अ पर्सन, बिकॉज इट इज नहीं रिलेटेड ऐसा टू, कोई जरूरी नहीं है वो प्रोफेशनल हो, वो कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, ये मैंने कहा ना वो कुछ भी हो सकता है, बट वो आपसे एटलीस्ट उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि व्हाई यू वांट टू नो दैट। अब ये तो आप सर्च कर सकते हो, कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, वो बहुत हेल्दी वे में आप पूछ सकते हो, है ना। जैसे आप पूछ सकते हो कि जो पर्क्स हैं या कि सर नॉर्मली हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच टू दैट मैनेजरियल पोजीशन लेवल तक, ऐसा पूछ सकते हैं। उससे आपकी दिखाएगा कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर एरिया, है ना। या लास्ट टाइम सर आई हर्ड अबाउट सम पर्टिकुलर इशू इन HPCL, इफ दे फेस्ड एनी पर्टिकुलर इशू, तब आप उसके बारे में पूछ सकते हो। अभी ये जो क्वेश्चन है आपने उसको प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं किया, रैंडम लग रहा है, ठीक है। अगर आप रिसर्च किया है इस पे देन यू कैन कम आउट विद वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अभी रैंडम हो जाएगा, अगर रिसर्च करके किसी अच्छे क्वेश्चन पे आओगे देन इट्स राइट, ठीक है। ओके ओके, हाँ। बाकी बहुत सारे वेबसाइट से चीजें बन सकती हैं, आप कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बता सकते हो, ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो ऐड नहीं है वेबसाइट पे, आप कंपैरिजन कर सकते हो IOCL का ONGC का, तो कलर कॉम्बिनेशन पे एक बना सकते हो सजेशन। कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो उनसे मिस हो गया है जो ऐड हो सकता है उस पे बना सकते हो, अच्छा, ठीक है। बाकी काफी तो वेबसाइट बहुत डायनामिक है, पहली वो काफी चीजें उन्होंने डाला हुआ है, बट फिर भी आई फील सजेशन तो आप बहुत सारे दे ही सकते हो, जैसे आपने बताया वो एक सजेशन है ही है विजिटर्स का, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन हाईलाइट। हाँ, जस्ट उनको ज्यादा भी क्रिटिक आईओसीएल में भी नहीं कलर। उसको पॉइंट वाइज पॉइंट बोलो, उसको आप ये मत बोलो कि वो आपसे ये पूछेंगे कि यार ये वो रेलेवेंट है नहीं है। सजेशंस कभी भी ऐसा नहीं होता, सजेशन जो आपको लगा आपने सजेशन दे दिया, तो उसको पॉइंट बोलो कि सर आई कैन गिव, यस सर आई कैन गिव सम ऑफ द सजेशन सर, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई फील बिकॉज दैट कलर कॉम्बिनेशन कैन अट्रैक्ट मोर व्यूअर्स, और तो ऐसा आपने कुछ बता दिया, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट है वो आप ऐड करवा सकते हो वहां पे, वो बता सकते हो कि वो ऐड करना चाहिए, तो सजेशन आप दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा एनालिसिस मार लो एक बार ना वेबसाइट पे घूम के, एक तो दूसरे वेबसाइट देख लो ONGC का या IOCL का या अदर ऑयल एंड गैस कंपनीज का, ठीक है। या कुछ और आपको UN का या कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसका वेबसाइट देख के कुछ ऐसा लगे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड, तो कोई इनपुट दो। आप एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी इनपुट आप दोगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें वो डाल सकते हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी भी उसी का पार्ट है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की जो चीजें हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो चीजें हैं, वो सब ऑलरेडी उन्होंने डाला हुआ यस, उन्होंने डाला है, यस यस, है हालांकि, बट फिर भी मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गैप इजिली यू कैन आइडेंटिफाई, ओके ओके, मे बी, ठीक है। हम्म। रिसेंट एक्टिविटीज व्हाट दे हैव डन, मे बी अगर वो फ्रंट पेज पे रखेंगे, मे बी। हाँ हाँ वो स्लाइड हो सकती है, अभी आप देखोगे वो नहीं है करेक्ट, वेबसाइट पे। ठीक सोच रहे हो आप कि जो पर्टिकुलर जो सर एक किसी इंडस्ट्री के लिए उसका कितना पेनिट्रेशन है सोसाइटी में, तो दैट वी कैन रिफ्लेक्ट थ्रू अवर CSR कंट्रीब्यूशन। तो CSR में जो भी हमारी लेटेस्ट जो हमारा वो रहा है कंट्रीब्यूशन रहा है, उसका जैसे ही हम वेबसाइट पे जाए तो वो आ जाए स्क्रीन पे कि HPCL ने अभी रिसेंटली CSR के थ्रू, कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो उसका काइंड ऑफ स्लाइड शो मूव कर सकता है, जो ज्यादा ठीक है। इम्पैक्टफुल वो हो रहेगा। सकता है, वो ठीक है, अच्छा सजेशन है। हाँ हाँ हाँ, या एनर्जी सेक्टर में क्या क्या कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, या कुछ HPCL का क्या कंट्रीब्यूशन चल रहा है, उसका कुछ स्लाइड शो हो सकता है, तो मिक्स्ड हो सकता है वो, दो चार ऊपर आइकन बन सकते हैं उसके। तो आप ठीक सोच रहे हो, उस पर थोड़ा वर्कआउट कर लो, बैठ के सोचोगे तो श्योरली यू विल गेट सम पॉइंट्स। करेक्ट सर, एनीथिंग रिगार्डिंग वो सीएमडी वगैरह जो एसपी से रिलेटेड है, लाइक उनका
work profile, some what additional regarding HPCL, CMD? आप पूछ सकते हो कि सर ये पूछ सकते हो कि वो तो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, वो तो पूछना ठीक नहीं है ना, वो रेलेवेंट नहीं है, वो तो आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। आप ये पूछ सकते हो सर कि हायर लेवल पे जाने के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इज ए barrier or all are equivalent, like suppose I'm from mechanical domain or someone from chemical domain or any other from any particular domain, so specialization in a particular domain supports us to reach to some particular level, or it's not a matter, like how I can reach to that level, or suppose आप ऐसा example ले सकते हो, if someone wants to reach to a particular level, some managerial top managerial position, so what actually HPCL expects to reach, or what organization wants from a candidate, तो आपको उससे अच्छा मिल जाएगा। उनको लगेगा कि यस दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज हैविंग दैट मच डिजायर, और वो पूछ रहा है आपसे, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो। Correct, sir. One more question, so just I got कि ऐसे पूछ सकते हैं because I have also prepared for GATE, so I'm also exploring for the higher education. So after joining, what are the various sponsored courses to go for higher education? Something like that. Can I ask? Means will it feel good on that? नहीं, अभी हायर एजुकेशन के लिए देखो वो ऐसा नहीं पूछना चाहिए ना अभी आपको, बिकॉज यू आर हैविंग दिस टाइप इंटरेस्ट इन पीएसयूज, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ, रिसर्च का पूछ सकते हो कि सर आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन डूइंग सम रिसर्चेस रिलेटेड टू एनर्जी, वो इनडायरेक्टली आपका हायर एजुकेशन का हो जाएगा, देन दे कैन सपोज स्पॉन्सर यू फॉर एमटेक और आईआईटी और समथिंग लाइक दैट। आप बोलो कि सर आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन दीज काइंड ऑफ रिसर्चेस, so can I get some opportunity after entering into the HPCL to do some research in this particular area, maybe biodiesel, maybe biofuel or any other area, ठीक है? अच्छा, तो वो आप बता सकते, देन दे कैन सजेस्ट कि हाँ हम एमटेक के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं इन सम ऑफ द आईआईटीज या कुछ भी, है ना? तो वो आप बता, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डू सम रिसर्च कि अभी क्या सर्च चल रहा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगे ना उसके बारे में, हालांकि वो लास्ट में होगा, हो सकता है उसके बाद आपसे क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, अच्छा, ओके 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 अनुज, अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप इसको करो आप एंड गो फॉर सम एचआर स्नैप्स एंड टेक्निकल स्नैप्स। गुड लक अनुज। थैंक यू सर, थैंक यू।